नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोनी केपलर और आप देख रहे हैं एमजे के ब्लॉग्स। तो आज हम लोग चलेंगे पीर पहाड़ मंगल हाट, ख्वाजा अहमद साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। इसके बाद फिर हम लोग वहां से चलेंगे बाराद्वारी और जामा मस्जिद। ये जो ट्रिप है ये बहुत मस्त होने वाला है और चलकर हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लॉग है आगे कैसा बनता है। तो बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है और मिनट में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। गाँव है तो गाँव में बहुत सारी गाड़ियाँ, खासकर छोटी गाड़ियाँ बहुत चलती हैं यहाँ पर, ऑटो वगैरह, जिससे नॉइज़ होता है। हम लोग को गाँव में ब्लॉगिंग करने में थोड़ा बहुत परेशानी आती है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. I'm on my last straw. और इधर साइड में मस्जिद है, हम लोग आगे जाके इसको भी कवर करेंगे। ये हम लोग आ चुके हैं पीर पहाड़ मंगल हाट। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं और ये नज़ारा आप यहाँ के देख लो पीछे। यहाँ से हम लोग वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद सीधा ऊपर जाएंगे मज़ार में बाबा के यहाँ और फिर वहाँ से फातिहा पढ़ के हम लोग निकलेंगे। काफ़ी अच्छा है। बरसात के दिनों में पानी पूरा भरा हुआ रहता है यहाँ तक, लेकिन अभी बरसात नहीं है, इसकी वजह से पानी थोड़ा कम है साइड में। इधर का भी आप लोग देखिए। Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be, making emotion paintable and so tell me, is this what you made me?
wistful decay. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause let's start over now. Rewind. And I won't let you go. I need you by my side. तो ये है बाराद्वारी जो राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं। अभी दिन का समय है 2:30 ऑलमोस्ट। धूप भी अपने चरम सीमा पर है, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी लोगों का यहाँ पर आवाजाही रफ्तार बढ़ता जाएगा। Like a diamond from gold. Maybe you are something I cannot define. Maybe you are the fallen kind. I lay in bed with violence, the silent side of me. We see where fire starts to breathe. When I would lay in silence, the voice inside of me made me lose my mind right. Made me lose my mind right. तो ये था हम लोग का 3 पहाड़ का अगल बगल के इलाका का थोड़ा सा छोटा सा कवरेज। तो जो कुछ भी हमने दिखाने का कोशिश किया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ जो साइट है और हमने अपने हिसाब से कवर करने की पूरी कोशिश की। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कुछ दूसरे सिनेमैटिक शॉट और बेहतरीन फुटेज जो 3 पहाड़ से बाहर की सीन होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होता तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।